आज हम बात करेंगे अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में क्या क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS1 होती है। उसके आउटर मोस्ट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस आर इंक्रीज इन द ग्रुप। यहाँ से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। then this group have low ionization energy because size of the atom higher than the particular row element. First ionization energy low होती है, second ionization high होती है due to the inert gas element. That's why strong electropositive metallic character increase on moving down the group. Most electropositive element, when we come down in the group, then electropositivity increase. Less electronegative element is cesium. Physical state, all are soft metal and silvery white color appearance and have a BCC structure at a room temperature. Coordination number 8, low melting point and boiling point due to the weak metallic bonding. Valence electron less. Melting and boiling point decrease on moving down the group. जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी और उसकी साइज़ भी बढ़ती है। उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, क्योंकि उसके बीच में इंटरेक्शन होता है वो कम हो जाता है, मेटल मेटल इंटरेक्शन लेस हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड ऑन द मेटल मेटल बॉन्डिंग। सोडियम सॉलिड ने गैस, ये सॉलिड कन्वर्टेड इनटू सोडियम गैस is called enthalpy of atomization, decrease down the group due to decreasing metallic bonding. Density, तो alkali metal have a low density due to a larger atomic volume and its increase in moving down the group, except density of sodium higher than potassium. Except lithium, they all photosensitive element. Potential energy proportional to 1 upon ionization energy. Down the group, potential energy effect increase hydration of the metal ion. हाइड्रेशन होता है मेटल आयन का, मेटल प्लस और ऑक्सीजन का माइनस। पार्शियल ये पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन होके हाइड्रेशन ऐसे मेटल के आसपास हो जाता है, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। सोडियम प्लस गैस प्लस H2 Na प्लस एक्वस हाइड्रेटेड केटायन। स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल प्लस एक्वस प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज। स्मॉलर साइज उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उसके आसपास ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी वजह से स्मॉल साइज सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसकी वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। चार्ज सेम है सब में और साइज़ इंक्रीज होती है। साइज़ इंक्रीज हो रही है तो कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है अफेक्टिव। इन एक्वस सॉल्यूशन, साइज ऑफ हाइड्रेशन आयन लिथियम प्लस की ज़्यादा होती है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस की सबसे लो होती है। मोबिलिटी मीन्स द वन आयन which is go from one place to another place, and the mobility in solution is लिथियम प्लस की लो होती है, सोडियम प्लस की इससे ज़्यादा होती है, पोटेशियम प्लस से इससे भी ज़्यादा होती है, रुबिडियम प्लस इससे भी ज़्यादा होती है, सीजियम से सबसे ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लिथियम प्लस लेस देन सोडियम प्लस लेस देन पोटेशियम प्लस लेस देन रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस।
solubility proportional to hydration energy. सबसे ज़्यादा सोल्यूबल लिथियम के हाइड्राइड होगी और सबसे कम सीजियम के हाइड्राइड होगी. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल. अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल के बारे में बात करेगी तो फ्लेम कलरेशन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी हर एक की एक डिफरेंट कलर होता है. जो लिथियम का होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का वायलेट, रुबिडियम का रेड वायलेट और सीजियम का ब्लूइश. इलेक्ट्रॉन वो मेटल पे अथड़ाता है, अटैक टू दिस मेटल एंड इलेक्ट्रॉन इज रिलीज. Again electron come back, they emit a photon, and a photon. Alkali metals show high reactivity due to three factors. Low ionization energy. Alkali metals have low ionization energy, low heat of atomization, metal solid to metal gas, high heat of hydration energy, metal plus gas to H2O, metal aqueous. Enthalpy is equal to ionization enthalpy plus atomization enthalpy plus hydration enthalpy. Ionization enthalpy and atomization enthalpy is positive value होती and hydration enthalpy negative value होती. In gaseous state it entropy increase. Lithium plus sodium plus rubidium, cesium. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is equal to ionization enthalpy plus atomization enthalpy. एक्वस स्टेट है, एक्वस में क्या होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा H इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू द एक्वस स्टेट. Electron potential also explain. Lithium plus aqueous greater than cesium plus aqueous, sodium plus aqueous, potassium aqueous, rubidium aqueous. Electron potential also explain. Reaction with oxygen. Oxide Li2O, oxygen minus 2 charge, Na2, O2, peroxide, O2 minus 2, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सुपर ऑक्साइड MO2, O2 minus 1. Because small size concentrated charge no further, this metal when present in liquid ammonia on reaction with O2 form a normal oxide. O minus 2, O2 2 minus, O2 minus. O minus 2 is oxide, O2 2 minus is peroxide, diamagnetic in nature, and O2 minus is paramagnetic nature. Metal oxide basically increase down the group. Oxide react with water and base. Alkali solution. Reaction with water and liberate the hydrogen gas and form a particular metal alcohol, M plus H2, MOH plus H2. This reaction exothermic. Metal react vigorously with water. Reactivity lithium is higher than sodium, potassium. Lithium is low metal reactivity, not easily react, and cesium is easily react with water. Because ionization enthalpy of lithium is low as compared to the ionization enthalpy of cesium. High exothermic nature, the alkali metal kept emerge in kerosene because they react with water and moisture. Lithium stored in paraffin wax because lithium has low density as compared to kerosene, so easily float and contact with moisture. Basicity. Metallic character increase. If metallic character increase, then basicity is increase. Bond length increase.
lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, cesium hydroxide. Cesium hydroxide more basic as compared to lithium hydroxide because the metallic character increase down the group. Solubility in liquid ammonia. All alkali metals soluble in liquid ammonia and giving a deep blue color due to a solvated ammoniated electron. Solvated ammonium electron. ये रहा solvated ammonium electron ENH3 minus X. When light incited with solvated electron exist higher energy level absorbing red color. When they fall back, they emit a blue color in visible region. VIBGYOR, volatile blue, green, yellow, orange, red. VIBGYOR, VBGYOR. Sodium react in liquid ammonia, form a sodium plus in liquid ammonia plus electron minus. Remove one electron in aqueous ammonia. This electron react with ammonia, then form solvated ammoniated electron. This solvated ammoniated electron react with Na plus ion in liquid ammonia, form NaENH3X. Deep blue color. Reaction with nitrogen. Only lithium react with nitrogen to form its corresponding nitride. Lithium plus nitrogen, lithium nitride Li3N. Li3N garam karwa heat, then it's decomposed into lithium plus nitrogen, dissolving in water. When we dissolve in water, they form ammonia and lithium hydroxide. Reaction with ammonia, corresponding amide are formed. When metal react with ammonia, they form amide, metal amide, MnH2 plus hydrogen, sodium NH2, sodamide. Halide of alkali metal. Lithium X, sodium X is equal to fluorine, chlorine, bromine, iodine. KX, RBX, cesium X. Lithium halide are covalent and other group halide, sodium, potassium, rubidium, cesium. They are ionic. Ionic nature explained on the basis of Fejan rule. Polarization increase, covalent increase, ionic character decrease. Ionic character more electronegative. If metal and cation and anion, difference between cation and anion is higher, electronegativity difference, then ionic character is observed. MF greater than MCl, MBr, Mi. Fluorine is more electronegative as compared to iodine. Given halogen, lithium halide, sodium halide, potassium halide, rubidium halide, cesium halide. Cesium is more electropositive as compared to lithium. Size of central atom. Cationic size increase, polarization decrease. Anion size increase, polarization increase. अब हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी. मेटल फ्लोराइड is more stable as compared to metal chloride, metal bromide and metal iodide. Metal iodide is less stable. Lithium fluoride is higher stability as compared to sodium fluoride, potassium fluoride, rubidium fluoride and cesium fluoride is very less stable. Both size very small. That's why thermally stable.
other halide. In other halide, you can observe there lithium halide a lower stability as compared to sodium halide, potassium halide, rubidium halide, and cesium halide. Melting point proportional to lattice energy. Melting point increase, then lattice energy also increase. So melting point of fluorine Mf fluorometal is higher as compared to metal chloride, metal bromide, and metal iodide, because these bonds are long and easily break. So that's why metal fluoride melting point is high. So lattice energy of metal fluoride is high. Lithium halide lattice energy Fejan as we discussed Fejan rule, lattice energy of lithium halide less than sodium halide, potassium halide, and greater than potassium halide, rubidium halide, and cesium halide is higher. Why lithium halide is less? Because covalent in nature. Why cesium halide is high? Due to the ionic in nature. So sodium halide is lattice energy most high, then potassium halide, then cesium halide, then rubidium halide, then lithium halide. Solubility in water. Solubility in water is proportional to the halide energy, hydration energy, proportional to 1 upon lattice energy. Lithium halide, sodium halide, potassium halide, rubidium halide, cesium halide. Lattice energy decrease down the group. Hydration energy also decrease. Hydration energy proportional to charge upon size, and lattice energy proportional to 1 upon atomic size. For fluoride, cesium fluoride is high stability as compared to lithium fluoride. For a chloride, lithium chloride acceptably soluble due to high hydration energy. Lithium chloride, sodium chloride, potassium, rubidium, cesium chloride. उसके ऑक्सो of the alkali metal, carbonate, bicarbonate, sulfate, nitrate. These are different oxo salt of alkali metal form. ऑक्सो साल्ट में हम पहले बात करेंगे कार्बोनेट ऑल मेटल फॉर्म मेटल कार्बाइन M2CO3 type of carbonates. These carbonates are thermally very stable and they melt before they decompose at temperature greater than 1000 of Celsius. First of all, they decompose and then melt. Thermally very stable and they first of all they melt before they decompose. वो जब डिकम्पोज होते हैं उसके पहले वो मेल्ट हो जाते हैं ग्रेटर देन एट 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे. मेटल कार्बोनेट when we heat it then greater than 1000 Celsius, then we form metal M2O plus CO2. Lithium carbonate are covalent in nature and thermal stability according to the Fejan's rule. We explain here thermal stability according to Fejan rule. Less stable due to the covalent character and more stable due to the ionic character. Cesium carbonate is more stable and lithium carbonate less stable. We go down the group, stability increase, solubility also increase. Bicarbonate, except lithium all elements form a bicarbonate. MHCO3 solid. Metal M is equal to sodium, potassium, rubidium, cesium except lithium. Lithium carbonate LiHCO3 except in aqueous solution. Each are formed in aqueous solution. Decomposition. What happens when metal bicarbonate decompose? Metal carbonate plus water plus CO2.
that generate metal carbonate. Sodium hydrogen carbonate bonding exists, which is sodium hydrogen carbonate and potassium hydrogen carbonate. Hydrogen bonding exists, which is different in both the compound. Sodium hydrogen carbonate hydrogen bonding may result in formation of infinite chain sodium hydrogen carbonate, and in potassium hydrogen carbonate a dimeric amine is formed. Here I will explain Here is the sodium hydrogen carbonate. Here the formation of a very long chain of sodium hydrogen carbonate, and here potassium hydrogen carbonate, the dimer is formed. Nitrate all form a water soluble nitrate MnO3, which reactive metal MnO3. M is equal to sodium, potassium, rubidium. MnO3 react which decompose into manganese metal nitrate decompose into metal NO2 MnO2 plus 1/2 O2. Lithium nitrate LiNO2. Lithium nitrate LiNO3 which decompose in and form Li2O plus NO2 plus 1/2 O2. अब हम बात करेंगे सल्फाइड के बारे में. ऑल एलिमेंट फॉर्म अ मोनोमेरिक सल्फाइड टाइप Na2S and polymeric sulfide type Na2SN. Polymeric sulfide contain zigzag chain of the sulfur atom SSS like sodium and potassium and their compound extraction of sodium. अब हम बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम के कंपाउंड के बारे में. देन अब हम बात करेंगे सोडियम. व्हाट इज सोडियम एंड दैट कंपाउंड. हाउ वी गेट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl. मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. NaCl लिक्विड मोल्टन and NaCl aqueous. Cl have in two form, in a liquid form and in aqueous in brine form, and liquid is molten form. ब्राइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस. अब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर ऑक्सीजन मिलता है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है. एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन गैस जनरेट, और कैथोड पे ऑक्सीजन जनरेट होता है गैस, ऑक्सीजन गैस रिडक्शन होके. द एक्सट्रैक्शन डन बाय डाउ प्रोसेस इन विच molten NaCl plus calcium chloride, here then steel gauge, here is a graphite anode, here is the iron steel cathode. Electrolyte used as NaCl and calcium chloride 40% 60%. Melting of the mixture become 600 Celsius from 800 Celsius of NaCl. Steel gauge, only molten NaCl pass through it. Steel gauge, molten NaCl pass through it. एनोड ग्रेफाइट रोड होता है एनोड के लिए, ग्रेफाइट रोड. देन कैथोड इज सिलेंड्रिकल आयरन कवरिंग एनोड, आयरन कैथोड covering anode. हम रिएक्शन की बात करेंगे. एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है. एनोड पे Cl माइनस है, क्लोरीन माइनस लिक्विड विच फॉर्म 1/2 Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन. एंड कैथोड पे क्या होता है, सोडियम प्लस लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, और -1 में से 0 हो जाता है. यहाँ पे +1 में से 0 हो जाता है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन होता है. अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द पोटेशियम. हाउ वी एक्सट्रैक्ट पोटेशियम. रिएक्शन कैरिड आउट इन द सेम सेल एट अराउंड 850 Celsius हाई टेम्परेचर. पोटेशियम इज obtained by Potassium is extracted at 850 Celsius at high temperature. Potassium is obtained by reduction of KCl with sodium metal. Reduction of
KCl का हम रिडक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम होगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा। Na gas plus potassium KCl liquid which form NaCl in potassium gas. Potassium being a more volatile distillate of N in the equilibrium shift forward direction, potassium obtained is 99.5% pure compound of sodium, sodium hydroxide or caustic soda NaOH, Na2CO3 plus CaOH2 calcium hydroxide. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, अब हम इसके कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और कॉस्टिक सोडा NaOH। हियर पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कॉस्टिक सोडा NaOH। हाउ टू बी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट react with potassium hydroxide, calcium carbonate react with calcium hydroxide CaOH twice at 80 to 90 degrees Celsius. They form NaOH and calcium carbonate. This sodium hydroxide is white crystalline solid, alkali nature, strong base, which with acid give a salt plus water, dissolve some metal like aluminum, zinc, lead, tin. Zinc plus sodium hydroxide Na2ZnO2 plus hydrogen release, tin plus NaOH Na2SnO2, sodium stenate, lead plus NaOH Na2PbO2, sodium plumbate, aluminum plus NaOH NaAlO2, sodium metal aluminate. Reaction with halogen, react in two conditions, cold dilute NaOH and hot concentrate NaOH. अगर कोल्ड डाइल्यूट NaOH है वो अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है H2 तो सोडियम हेलाइड बनाता है एंड NaOX हाइपोहेलाइड बनाता है, NaX एंड NaOX, सोडियम हेलाइड एंड सोडियम हाइपोहेलाइड। अगर कॉन्सेंट्रेट और हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो NaX हेलाइड प्लस NaXO3 सोडियम हेलेट बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो NaF प्लस O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड F2 NaF प्लस OF2। अगर कोल्ड और डाइल्यूट है वो फ्लोरीन NaF प्लस OF2। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड react with carbon dioxide from sodium carbonate plus water. Reaction with sulfur, mixture of sodium sulfate and sodium thiosulfate, फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फर तो Na2S, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। रिएक्शन विथ साल्ट ऑफ मेटल, salt of iron, nickel, aluminum, copper etc. form their corresponding hydroxide PPT of different color. Iron react with NaOH form iron oxide or iron hydroxide FeOH3. PPT's color is brown red. Aluminum plus NaOH, aluminum hydroxide white PPT, which react with NaOH further and NaAlO2, sodium aluminate, sodium metal and metal aluminate. Manganese plus 2 react with NaOH from manganese hydroxide pink PPT. Chromium plus 3 react with sodium hydroxide from chromium OH3 green PPT. Copper plus 2 react with
NaOH from copper oxide CuOH2 blue PPT. Mercury Hg+2 react with NaOH from mercury hydroxide unstable hydroxide which is decomposed and from mercury oxide plus H2O yellow PPT mercury oxide reaction with ammonium salt and release ammonia gas. Ammonium chloride plus NaOH Na3 gas plus H2 plus NaCl. सोडियम कार्बोनेट यानी अब हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड के बारे में. उसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडा एस. वॉशिंग सोडा अथवा तो सोडा एस Na2CO3 एनहाइड्रेस होगा तो इसको बोलेंगे सोडा एस. अगर हाइड्रेटेड होगा इंटू 10H2 होगा तो इसको हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे. प्रिपरेशन हम सोल्वोलिसिस प्रोसेस से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. रॉ मटेरियल यूज़ होता है NaCl सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एमोनिया. NaCl का जो सॉल्यूशन तो ब्राइन होता है. कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोज कैल्शियम एट हाई टेम्परेचर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देन एमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म एमोनियम हाइड्रोजन carbonate NH4HCO3 further react with NaCl form NaHCO3 plus NH4Cl. NaHCO3 further heat at 150 celsius form sodium carbonate crystallization, then form sodium carbonate into 10H2. इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. White delicate crystalline solid, its aqueous solution basic in nature. Hydrolysis react with water, sodium carbonate react with water from sodium hydroxide plus water plus carbon dioxide. Second, reaction with acid. First sodium carbonate plus HCl, sodium hydrogen carbonate plus NaCl. First equivalent point phenolphthalein. First equivalent point observed by phenolphthalein. Second equivalent point HCl. Methyl orange indicated. Then we observe second equivalent point phenolphthalein. First methyl orange, second equivalent point which react sodium hydrogen carbonate react with HCl. Here we can observe second point NaCl plus H2O plus CO2 reaction with silicon oxide. Sodium carbonate react with silicon oxide form water glass Na2SiO3 plus CO2 soluble in water. Sodium thiosulfate hyposolution, sodium hydroxide plus sulfur, sodium sulfate plus sodium thiosulfate plus water. It is very good reducing agent. Acidity H2O3 further from S4O6. Very good reducing agent that from S4O6 it can reduce iodine to I minus I2 plus H2O3 minus O3 minus 2, which further reduction of iodine to I minus plus S4O6 minus 2. Due to this reaction, hypo can be used for quantitative estimation of the iodine in iodometric titration. Reaction sodium thiosulfate Na2H2O3 into 5H2O hyposolution which react with silver nitrate solution from white PPT. Silver thiosulfate Ag2H2O3 and sodium nitrate. White PPT further boiled with black silver sulfate solution. Thiosulfate react with potassium. This is a quantitative estimation of particular presence of silver, presence of
of sodium. Here we react with the calcium. Here we react with sodium thiosulfate Na2H2O3 into 5H2 react with copper plus 2 from CuH2O3. We further react with sodium thiosulfate from Na4Cu6H2O3 5. Reaction with chlorine and bromine, Cl2 and Br2 water. Sulfur is PPT. Sodium thiosulfate Na2H2O3 plus Cl2 plus water. Then from Na2SO4, Na2SO4, in which sulfur oxidation is plus 6 plus HCl plus sulfur, wide turbidity. Plus 2 to plus 6 and 0 is called a deproportional reaction. React with halogen Cl2 or Br2, they form disproportional reaction. सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर. अब हम बात करेंगे कंपाउंड ऑफ पोटेशियम. इसमें हम बात करेंगे ऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम कंपाउंड पोटेशियम ऑक्साइड, नॉर्मल सुपर ऑक्साइड एंड सिस्को ऑक्साइड. नॉर्मल ऑक्साइड K2O, सुपर ऑक्साइड KO2, सिस्को ऑक्साइड K2O3, K लिक्विड एमोनिया प्लस 3O2 K2O3. normal oxide K2O. How we form a K2O? First of all, potassium excess react with oxygen, form K2O, which further react with H2O and produce a hydrolysis. K2O further react with water and form hydrolysis, which form KOH. Superoxide K plus O2 excess KO2. Here is potassium excess and here is oxygen excess. In oxygen excess, which form a superoxide, KO2 plus water, potassium hydroxide plus H2O2 plus O2, potassium liquid ammonia plus 3O2 K2O3, superoxide. Both the superoxide and oxide produce KOH, potassium hydroxide. Further, potassium iodide preparation. Potassium hydroxide reacts with hydrogen iodide, form potassium iodide plus water. Potassium hydroxide react with iodine, that form potassium iodide plus water plus KiO3. I2, which iodine is reduced, potassium plus 1 to plus 5, which is oxidized. Iodine plus 2I minus give 2I minus, I2 2IO3 minus, I2 2I minus plus IO3 minus. प्रॉपर्टी की हम बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, absorbs I2 to form Ki3. That's why solubility of iodine increase in the presence of potassium iodide. Ki plus I2 Ki3 minus. Reaction with metal set. Potassium iodide react with silver nitrate, which form silver iodide, yellow PPT, insoluble in NH4OH, which give the presence of the potassium. Potassium iodide further react with lead acetate PbCH3COO twice, then form lead iodide, yellow PPT. Potassium iodide react with copper sulfate, which form CuI2, unstable. Further, it's react and form Cu2I2, white PPT.
mercury dichloride. Mercury dichloride react with potassium iodide from mercury I2, scarlet red PPT, HgI2. React with potassium iodide further, then form K2HgI4, Nessler reagent. K2HgI4 used for detection of NH4 plus ion. K2HgI4 Nessler reagent used for detection of ammonia plus ion. React with Nessler reagent ammonia plus ion, brown PPT is formed. Iodide of million base, NH2HgO HgI. Compound X halogen impart a golden yellow flame and show a following reaction. Zinc powder when boiled with concentrated aqueous solution of X, zinc is dissolved and अब एक क्वेश्चन दिया गया है, अ कंपाउंड X impart a golden yellow flame and show a following reaction. Zinc powder when boiled with concentrated aqueous solution of X, zinc is dissolved and hydrogen gas released. When aqueous solution of X is added to SnCl2 solution, white PPT form which dissolve in excess of X. Identify X and write the equation. Golden yellow flame, sodium metal. Zinc react with X, form hydrogen. So zinc react with NaOH, then form Na2ZnO2, sodium zincate plus hydrogen. Further, SnCl2 react with NaOH, form tin hydroxide SnOH3, which is white PPT. Further react with NaOH from Na2SnO2 plus H2O. Another question is sodium carbonate react with SO2, form sodium hydrogen SO3, NaHSO3. Then sodium carbon further react from B compound which is Na2SO3. They further react with element sulfur that form Na2H2O3, thiosulfate. Further react with iodine, reduce iodine, then form Na2S4O6. हम बात करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम. Due to extremely small size of lithium, higher melting and boiling point than other metal, only lithium form nitrate Li3n and other elements of the block not formed. Lithium hydrogen carbonate only exists in aqueous solution and other bicarbonate in solid state. Lithium hydroxide least basic and less stable, which further decompose in Li2O plus hydrogen. Its compound with non-metal are predominantly covalent, whereas other metal compounds are ionic. Only Li2CO3, lithium carbonate, thermally unstable. Other carbonate are thermally stable. Lithium carbon decompose form dilithium oxide plus CO2. Lithium nitrate on heating form a oxide, whereas other element form corresponding nitrate. LiNO3 heat lithium oxide plus NO2 plus 1/2 O2. Metal nitrate heat metal nitrate MnO2 plus 1/2 O2.